बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये किसने इंट्रो किया था, वो कहाँ गए? मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं तो माइंड को नहीं करोगे? अच्छा, सबसे पहली तो करेक्शन ये कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 8,100 नहीं थी। मेरी स्टार्टिंग सैलरी 3,200 रुपए थी। 8,100 मेरी दूसरी जॉब पे थी, और जब मैं जॉब छोड़ के जा रहा था तो वो जिसने बोला, मेरे बॉस ने, आयरिश बॉस होता था, माइकल फिलिप सेंट जॉन मैडॉक, उसने कहा फ्रैंकली दे आर पेइंग यू टू मच। मेरी एंडिंग सैलरी जो है वो 5.7 मिलियन नहीं थी, मेरी एंडिंग सैलरी जो है वो 7 मिलियन थी। शेयर्स मेरे पास 2 मिलियन नहीं थे, शेयर्स मेरे पास 3 मिलियन थे, लेकिन उनमें से एक भी मेरे पास नहीं है। मैंने सारे भेज दिए थे व्हेन आई एंटर्ड पॉलिटिक्स, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, I did not leave all of this to rebuild Pakistan. I did all of this to build नया पाकिस्तान। पुराने वाले की डेंटिंग पेंटिंग से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, नाउ टू गेट टू द टॉपिक ऑफ द डे। अच्छा, ये टॉपिक भी जो है ना, ये लड़के, ये तौसीफ अब्बासी या सिर्फ रियाज, जो लोग समझते हैं ये मेरे साथ काम करते हैं, उनको एक्चुअली ये नहीं पता मैं इनके साथ काम करता हूं, क्योंकि इन्होंने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी। जो ये चाहते हैं वही होता है। तो मेरा टॉपिक बदल गया, मेरा टॉपिक कुछ और था, मैंने कल देखा तो पता चला मेरा टॉपिक बदल गया। सो ओके, विल टॉक अबाउट, बट आई विल वीव इन द स्टोरी दैट आई वाज गोइंग टू टेल यू इन द टॉपिक दैट दे हैव असाइन्ड टू मी। और टॉपिक की बैकग्राउंड ये है कि मैं इनको बता रहा था एक दिन कि मेरी एक अप्रोच थी। मेरा 1991 में जब मैं कनाडा से वापस आया, उसी वक्त पाकिस्तान का पहला मैनेजमेंट लेड बायोट हुआ था, एक्सॉन एंड बिकम एंग्रो। तो मेरी जो जॉब थी, इनिशियली तो मैं फाइनेंस के अंदर आया, प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा था, लेकिन अबाउट अ ईयर लेटर कंपनी ने न्यू वेंचर्स डिवीजन बनाया। और न्यू वेंचर्स डिवीजन का काम ये था कि नए बिजनेस को डेवलप करना कंपनी के लिए, एंड आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय टू बी असाइन्ड टू इट। तो अगले कोई तकरीबन 15 बल्कि ऑलमोस्ट 20 साल, that's primarily what I did. I built new businesses. So there was a certain approach that I developed, खुद काम करते करते, कि बिजनेस डेवलप करने के लिए, कोई या बिजनेस डेवलप करने के लिए क्या सही तरीका होता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस कमरे में बैठे हैं उनकी तरह मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो I could not articulate it in precise language. Until I went to a conference in Lums. तो उस पैनल के अंदर 2 स्पीकर्स थे, एक मैं था and the other fellow was a legend of Indian politics. जब इंडिया ने initially global markets के ऊपर एकदम से रजिस्टर किया ना, तो one of the first guys who became really a rock star of Indian politics was a fellow called Chandrababu Naidu. Chandrababu Naidu was Chief Minister of Andhra Pradesh, and he played a phenomenal role. और उस जबरदस्त काम करने का आंध्र प्रदेश की अवाम ने उसको सलाह ये दिया कि अगले इलेक्शन में उनका सफाया हो गया उनकी हुकूमत का। लेकिन काम उसने बड़े अच्छे से किए। एंड उसकी प्रेजेंटेशन जो है, उसके अंदर उनकी अप्रोच पे एक स्लाइड लिखी हुई थी, एंड आई सॉ दैट स्लाइड एंड आई सेड यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू। एंड दैट स्लाइड वाज थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एंड आई एडेड अ थर्ड लाइन टू इट व्हिच वाज स्केल अप रैपिडली। बिकॉज आप जितनी भी तैयारी कर लें और जितना भी आप बिजनेस के बारे में सोच लें, जैसे सलमान बता रहे थे कि नोज पीपल जो 10-10 साल से बड़े अच्छे आइडियाज हैं और वो आइडियाज ही डिफाइन करते रहते हैं अपने दिमाग के अंदर। दैट्स बिकॉज सलमान ये इसलिए कह रहे थे कि सलमान इज अ यंग मैन। इफ ही वाज माय एज ही वुड हैव सेड कि मैं लोगों को जानता हूं जो 25 साल से आइडियाज डिफाइन कर रहे हैं और अभी भी वहीं खड़े हैं, while Salman Danish की कंपनी becomes bigger and bigger and bigger every year. So there is only so much thinking you can do. चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, जितना भी एक्सपीरियंस, जब जिस तरह मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, all that you learn is that you learn not to make the mistake of the past project, but you will still make mistakes. There is no way on earth, there is no, I'm not trying to emulate Shivaji, I'm sorry.
anything else. I don't even have laptops to distribute. So मैं कैसे कर सकता? एक certain limit है जिस तक आप सोच सकते हैं. And only when you do things do you start to really learn about that particular. Chinese proverb है, बहुत पुराना. China की हर चीज हजारों साल पुरानी होती है. It's an old culture. So I don't know exactly when. It might have been from Confucius, but there is a Chinese proverb which is phenomenal. It's something that you must all remember. You hear and you forget. You see and you remember. You do and you understand. जब तक आप करेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं. So do some thinking about your idea. आप एक सोचें, एक आइडिया है और उस आइडिया को आपने इनिशियल थिंकिंग की, उस पर थोड़ी तैयारी की, प्लानिंग की, and after that you have to be willing to venture out and take that risk, which is the heart of entrepreneurship. But there is only so much that you can afford to risk, both financially as well as emotionally. अगर आपको बहुत बड़ी कोई शिकस्त हो जाए, तो वहां से रिकवर करना मुश्किल हो जाता है. And obviously, you have limited finances. Most entrepreneurs, when they're starting off, would have limited finances. And there is also that other X factor, which is a reputational issue. कि अगर आप बहुत बड़ा एक disaster कर देते, तो उसके बाद लोगों आपकी credibility लोगों में shake हो जाती है. Therefore, you find it difficult to then galvanize people to support the ideas that you have. So, for all these reasons, it is important that you find a way to start small. But there is another reason for it, and that is something that I could have never intellectually thought about. That is again something that I have learned through experience. अगर आप जिंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, if you want to do something good, you must be very well prepared and you must plan for it. ये बहुत जरूरी है. और आपको मैं ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर्स देखता हूँ तो उसके अंदर ये एस्पेक्ट जो है वो लोग जरूर कवर करते हैं. But mark my words, great things in life do not happen through planning. Great things in life happen through what in the English language is called serendipity. या जो अल्फाज इमरान खान इस्तेमाल करते हैं कि एक इंसान की सोच होती है, एक अल्लाह ताला की सोच होती है. तो होता है वो जो अल्लाह ताला चाहता है. So therefore, in any model, any new business that you're developing, you must find the ability to develop a model where you can start small, but a model which is scalable. You must ask this question. I've seen so many new businesses being developed where people forget to ask this question. You can have a great idea, it can be extremely successful, but it's not scalable. What's the point of that idea? So the last line, as I said, which I added, which is the ability to scale up rapidly, is critical. So you do your planning, you implement, you find the learnings from it, you fine-tune the model, and then you rapidly scale up. And now you have the confidence to go ahead and risk more. You have demonstrated success, so you can find people to back what you're doing. It's so much easier to raise money now, because you've got demonstrated success. You've seen a model and you've shown people a model which actually delivers. And I'm going to keep my speech very short today because you get a question answer session karna hai, so I'll let you ask more of the question. But just take example of how we went about doing this. And how do you face challenges जब uncertainty होती है, जब adversity मिलती है, तो the ways of solving that problem. मैं इंग्रो टॉप का सीईओ बन गया, primarily a chemical company, primarily a wholly a chemical company at that point in time. And we did some हमने new ventures division एक बनाया, बना हुआ था already, उसको और beef up किया. And we came up with this idea कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके साथ जो फिट बनता है. अगर if you look at Engro's strengths and you look at Pakistan's fundamentals, the thing to do is to go into foods. So हमने उस पर काम करना शुरू किया. पहली बोर्ड प्रेजेंटेशन जो हमने की, तो पूरे बोर्ड में एक आदमी सिर्फ था who thought it was a good idea. Everybody else thought it was a bad idea. The exact words of the chairman of the board were,
ये तो ऐसा बिजनेस है जिसकी तरफ हमें देखना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। So come out of the room, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे न्यू वेंचर्स के खालिद मंसूर, उनके कमरे में हम गए बोर्ड मीटिंग के बाद। खालिद मंसूर से काम खत्म कर दें, क्यों काम खत्म? उसने कहा सुनो, आपके बोर्ड में कोई सपोर्ट ही नहीं है, इसको चेयरमैन कह रहा है इसको देखना भी नहीं चाहिए। ऐसा दैट्स नॉट हाउ इंस्टीट्यूशंस वर्क, एंड एंग्रो इज एन इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। You've got a responsibility to complete a feasibility study. You complete a feasibility study, we go in for the final presentation, and then we take a decision. So we did the feasibility study. In the final presentation, जहाँ पे approve होना था, there was, except for one person, there was not a single person who disagreed with the concept. We got, except for that one vote, almost a unanimous approval. And before I tell you more of the story, the same thing got repeated when Anglo Foods, जब कैनेडा एक्विजिशन की बात करी थी, उस वक्त बात हुई। उस वक्त तक एक बोर्ड इन्वेस्टमेंट कमेटी बनी थी। उस इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंदर बोर्ड मेंबर्स होते थे, मैं नहीं था उस पार्ट ऑफ दैट कमेटी। और फिर वहां से प्रपोजल जो है वो आते थे बोर्ड, जो कॉप था उसके बोर्ड के पास, तो फाइनल डिसीजन। तो जिस वक्त फाइनल डिसीजन हुआ तो मैंने जो रेलेवेंट मिनट्स थे वो जिन एग्जीक्यूटिव ने डेवलप किया था एंग्लो फूड्स में, उनको मैंने भिजवा दिया। तो मुझे शाम को जब डायरेक्टर मार्केटिंग होता था, नाउ इज बैक विद कोक, अली अकबर का फोन आया। एंड अली अकबर से सर मैं 3 दफा इन मिनट्स को पढ़ चुका हूं, एंड आई एम अमेज्ड ईच टाइम आई रीड। एंड द मिनट्स, दिस इज फ्रॉम द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। द मिनट्स स्टार्ट बाय सेइंग द बोर्ड इन्वेस्टमेंट कमिटी unanimously rejected the proposal for acquiring the Al-Safa franchise in Canada and North America. And उसके बाद सारी discussion है, how the discussion takes place in the board meeting, and the ending of the minutes say, and the board, which included all the board investment committee members, and the board unanimously approved the acquisition. So here is a project which has uncertainty attached to it. जब uncertainty होती है ना, ये याद रखना है कि entrepreneur के लिए 2 qualities बहुत जरूरी हैं. You need a big vision, and therefore a big mind, and you also need a big heart. जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और दिल छोटा है, he or she will keep on doing analysis and will never take a decision because they can figure out everything that can go wrong, but don't have the heart and the courage to take that risk. जिसका दिल छोटा है और दिमाग बहुत बड़ा है, और दिल बड़ा है और दिमाग छोटा है, he will take reckless risk. He will take risks that should not be taken, or she will take risks that should not be taken. So you need a balance of the two. So what did we do? We went there. जो board हमने पूरी डिटेल feasibility दी. The feasibility said इस business के अंदर potential है, but more than that, we said यार जितनी total हम आपसे investment मांग रहे हैं, जितनी equity मांग रहे हैं, आपने इस साल का जो board ने annual earnings target set किया था, उस earnings target को हम exceed कर रहे हैं by $1.5 billion. The total investment required is $1.2 billion. So ये तो सिर्फ वो earnings जो आप expect ही नहीं कर रहे थे, हमने इससे finance कर दिया है. ये आप समझे कि ये project जो है ये हमने अपनी जेब से लगा दिया. So the board chairman was not amused by that argument, but he did by the feasibility. We went in there, and what target did we set for them? अब एक नए बिजनेस में जा रहे हैं, केमिकल कंपनी है, FMCG बिजनेस के अंदर जा रही है, कभी उसने इस किस्म का बिजनेस ही नहीं किया है. Team आ रही है entirely, almost entirely the team is coming from outside the company. CEO came from Pepsi, director marketing from Coke, director sales from Halib, director finance from Unilever, and so on so forth. पूरी नई टीम बनी है. मुकाबला किससे करने जा रहे हैं? The biggest food company in the world. हमने कहा कि मैच अगर खेलना ही है तो फिर तगड़ी टीम से खेला जाए. Why play against a normal player? Play against the best in the world. The biggest food company in the world with a market share of 45% in the category that we are entering, उनके खिलाफ मुकाबला होने जा रहा है. And what targets am I setting for my team? And I'm making that commitment in front of the board. I said within 5 years, Anglo Foods will be #1 in this category, and we will achieve sales of 25 billion rupees in a company जो 1 billion की annual sales से start कर रही है. ये तो आप तालियां बना रहे हैं ना, जिसके लिए टारगेट सेट हो रहा था उससे पूछते हैं आपको कितनी खुशी की बात है. But what did that team deliver? And why did that team deliver? Because that team was driven by passion. हमें पता है एग्रो फूड की जो मेन हॉल होता था उसमें बीच में हमने क्या लटकाया हुआ था? Salman, you remember that Stephen Jobs Apple का ad, "Here's to the crazy ones," the round holes in the square pegs, or the square pegs in the round holes. And the ending line क्या थी इसकी?
For it is those who dare to dream who change the world, or some words to that effect. That was the driving spirit. लोग सुबह 3-3 बजे 4-4 बजे तक दफ्तर रहते थे. That's how driven they were. पहले साल की सेल्स 1 बिलियन रुपीस. ये नंबर याद रखना. पहले साल की सेल्स 2006 1 बिलियन रुपीस. 2006 से 2012 टोटल इक्विटी इंजेक्टेड बाय एंग्रो 7 अरब रुपए. 7 अरब रुपए की टोटल इक्विटी कंपनी में 1 बिलियन रुपीस. 2012 सेल्स 37 बिलियन रुपीस. 2012 and I'm saying 2012 because that was last year as CEO. So इसलिए मैं 2012 के नंबर ले रहा हूँ. Midway through 2012 ले. Earnings, net profit after tax almost 2 billion rupees. 7 billion total equity. But here is the most interesting part. Market equity the equity market capitalization. 7 अरब रुपए total equity inject की हुई है. You know what the market cap of the company was end of 2012? More than 70 billion rupees. 70 अरब रुपए से ज्यादा, यानी 63 billion rupees की shareholder wealth create हुई in a sum total of 6 years. 63 billion rupees out of an investment of 7 billion rupees only. That's what comes when you think big. But we started small. We started, remember, with 1 billion rupees of sales, and the model was scalable, and we exploded then. In 3 years and 7 months, in 3 years and 10 months, they overtook Nestle to become the market leaders in Pakistan. And when I left, 2012 के exit market shares were Nestle 35% and Agro Food at 45% in that category. So do a lot of homework, come up with a model which is small, implementable, get your learnings from that model, be willing to take risk after that based on the homework that you have done, but much more importantly, from the belief that you have in you. And inshallah ta'ala, one of these days, you will be standing here and telling your story like Salman Danish and many others here, and you will be guiding the next generation of entrepreneurs in Pakistan. Questions?